Hello everyone. Recently, this type of question, the remainder type of question, is coming to the JEE Mains examination. As we can see that the question is there, the remainder when 64 to power 64 to whole power 64 is divided by 7 is equal to, like these all questions basically in the from the chapter binomial theorem. So the convention method is to solve this as it is given 64 to power 64 to whole power 64. Okay, so I can write it 64 to power 64 into 64 with the power equation, power formula. So anyhow this 64 is nothing but 64 to power n. So I need to find the remainder of 64 to power n once it is divided by 7. So basically the question given here is to just to confuse the 64 to power 64 to power 64. Instead of we can solve 64 to power n, we will get the same remainder. Okay. So what we will do, I will write 64 to power n in the form of 63 plus 1 to whole power n. Why I am writing 63 plus 1 only? Because near to the 64, the 63 is divisible by 7. Okay. So with the basic expansion, we know that 1 plus x plus 1 to whole power n, nc0 x to power n plus nc1 x to power n minus 1 plus dot 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 nc0 ncn. So we can use this expansion here, nc0 63 to power n plus nc1 63 to power n minus 1 plus dot 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 ncn minus 1 63 plus ncn. Okay. So this is the expansion of 63 plus 1 to whole power n. This is okay. So I need to divide this with 7. Okay, like if I divide nc0 63 to power n plus nc1 63 to power n minus 1 dot dot plus ncn minus 1 63 plus ncn divided by 7. So what will get the remainder? What will I do? I will take common 63 from each of the terms from here to here. If I take 63 common, I will get 63 nc0 63 to power n minus 1 plus nc1 63 to power n minus 2 plus dot 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 ncn minus 1 plus ncn divided by 7. Okay, as you can see that 63 is a multiple of 7. Okay, 63 is divisible by 7. So I can write like 7 into 9 into this, and this all thing from here to here I am writing x. Okay, plus ncn divided by 7. So as you can see that x can be number only, as we know that the binomial expansion is going to be number only. This is not going to fraction, this is going to natural numbers. So I can write this as a 7k plus ncn I can write is 1 by 7. So this the whole power n, which is a 64 to power n, can be written in the form of 7k plus 1. And if I divide a number of 7k plus 1 with 7, so it will leave remainder 1. So if we divide
the remainder when 64 to power 64 to power 64 divided by 7 is what is 1. So this is the conventional method as we follow, but can we follow the same thing in the J examination? No, we can't follow the same thing in the J examination. Why? Just because if we follow this, it will takes our time. So instead of that, we will do some shortcut tips for that. So what is the shortcut tips? Instead of doing all this process, what we can do is we can do some shortcut like 64 to power 64 to power 64. So 64 to power 64 into 64 we can write, which will write as a 64 to power n. ठीक है. So हम क्या करेंगे कि 64 टू पावर n को मुझे डिवाइड करना है 7 से. सो रिमाइंडर क्या आएगा? सो दिस कैन बी रिटन एज 64 इंटू 64 इंटू 64 की n टाइम्स divided by 7. Okay. What if I divide 64 from 7? If you divide 64, it will give remainder 1. Okay. So remainder 1, it will give remainder 1, it will give remainder 1, it will give remainder 1 up to n times divided by 7. अगर हम 64 को मल्टीप्लाई करने जाते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अगर 64 के मल्टीप्लाई करने के बदले हम क्या किए 1 को मल्टीप्लाई करते हैं n टाइम्स. तो 1 को कितना बार भी मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आएगा. 1 डिवाइडेड बाई 7. तो 1 डिवाइडेड बाई 7 इसका मतलब क्या है कि रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा 1 आएगा. ठीक है. सो इट्स दैट सिंपल. और जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल है भी नहीं. मैं मतलब कुछ एग्जांपल देता हूँ. अगर मुझे अगर 64 की जगह पे क्या रहता 65 टू पावर n डिवाइडेड बाई 7 रहता, तब क्या करते हैं हम? अगर 65 रहता तो 65 इंटू 65 इंटू डॉट 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 कितना करना पड़ता हमको 65 n टाइम्स डिवाइडेड बाई 7. तो अब जो 65 को अगर हम डिवाइड करेंगे हम 7 से तो हमारी रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2. 2 इंटू डॉट 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 2 n टाइम्स डिवाइडेड बाई 7. देखिए अभी तक क्या था कि 1 को कितना बार भी गुना करेंगे हम तो 1 ही आएगा, लेकिन 2 को कितना बार भी गुना करेंगे 2 नहीं आएगा, या फिर हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे नंबर. इंस्टेड ऑफ डूइंग 2 इंटू 2 n टाइम्स, ओके, विल डिफाइन n है क्या. ठीक है. n हमारा क्या था 64 इंटू 64 कितना होगा लाइक 64 इंटू 64 कितना हो जाएगा 4096. सो 2 को मल्टीप्लाई करना है कितना बार 4096 बार. ठीक है. अब 2 को 4096 बार मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करना है. अब हम क्या करेंगे कि 2 बहुत हो गया, 2 के बदले हम क्या करेंगे 2 करेंगे इंटू 2 करेंगे इंटू मतलब 2 का 3 पेयर बना देंगे ताकि रिमाइंडर क्या आ जाए 7 से डिवाइड करने पर 1 आए. क्यों? क्योंकि 2 8 8 डिवाइडेड 7 कितना आ जाएगा 1 रिमाइंडर. ठीक है. कितने बार हो सकता है ऐसा ये देखना पड़ेगा. 3 का पेयर बनाना है. टोटल कितना है 4096. ठीक है. 1 9 1 6 बनती है 15 1. ठीक है. इसका मतलब टोटल जो है 2 का कितना 1365 पेयर बनेगा. ठीक है. कितना बनेगा 1300. 2 का 1365 पेयर बनेगा. आप लिख लेते हैं 1365 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू
4096, ठीक है। 2 × 2 × 2 का 1365 पेयर बनेगा। 1365 टाइम्स एंड इंटू 2 एक लास्ट में बच जाएगा, ठीक है। सो इफ आई डिवाइडेड 8 with 7, what I will get remainder as a 1, remainder as a 1, as a 1, or we can write instead of 2 into 2 into 2, I can write 8 into 8 into 8 into dot 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 1365 times into 2, ठीक है, divided by 7. So what I'm getting 1 into 1 into 1 into 1 into 1 into 1 कितना 1365 बार, इसका मतलब कितना हो जाएगा 1 into 2 डिवाइडेड बाई 7, इसका मतलब 2 डिवाइडेड बाई 7, इसका मतलब रिमाइंडर जो है हमारा कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। क्यों 1365 को अगर हम डिवाइड करते हैं हम 65 टू पावर 4096 को अगर डिवाइड करते हैं 7 से तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2 आएगा। सो इट्स इट विल गेट सिंपल इफ द नंबर इज गिवन इन टर्म्स ऑफ +1, लाइक 64 था यहाँ पे, तो 7 का मल्टीपल +1 है तो इसलिए डायरेक्ट हम कर सकते थे, लेकिन 7 का मल्टीपल +2 था यहाँ पे, तो 2 का फिर वैसा पेयर खोजेंगे अगर डिवाइड करने पर 7 आ जाए या फिर थोड़ा सा मतलब 2 से कम नंबर है, ठीक है, तो उस समय क्या हो जाएगा हमारा टाइम जो है बच जाता है एज कम्पेयर टू कन्वेंशन मेथड वी फॉलो लाइक दिस, ओके।